國際消息，咱來看印度的國家醫學考試發生大規模題目流出去兼詐騙的情形。當局決定這一屆考試無准算，6月2日會閣重考。若政府為着要預防閣出代誌，因關起封鎖通訊軟體 Telegram， 想要到煞是引起全國學生的抗議。牙票機大聲喊口號，印度新德里採抗議的全是少年人。Question paper लीक हो जा रहे हैं मतलब हमारी कंट्री में तो ये सिस्टम का फेलर है。關係230萬位考生的前途，因為國家醫學系入學的考試發生題目去放大規模漏洩的醜聞，讓全國即馬攏足着急的。The platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters. 6月2日特別重新考試，為着確保公平，印度政府即馬態度大正嘅，宣布全國暫時封鎖通訊軟體 Telegram， 一直到2日，甚至要求 Google 一個 Apple Store 愛甲 Telegram 落架。NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen。官方嘅調查發現，詐騙集團進前先佇咧 Telegram 發布假嘅考前猜題，佇咧考試刷了後，佮用信息編輯嘅功能，把這個內容改做真正嘅考題，用安尼方式來製造考題提早去放漏洩嘅假象，來騙學生嘅錢。Telegram groups में जो activities हो रही हैं, उसको देखते हुए, I think it's better for short term कि उसको ban कर दिया जाए。不過個 Telegram 嘅創辦人就痛罵新德里當局用這款嘅禁令根本是治標無治本，甚至讓印度1億5千萬嘅用戶無辜受到影響。倡議嘅人士嘛，質疑這個政策是危險嘅，恐驚會扼殺上萬位學生利用群組來分享資源、做伙討論嘅權益。और मतलब सोशल मीडिया एप्स को रिस्ट्रिक्ट करने से कुछ नहीं होगा अगर मतलब पहले से थोड़ा ठीक तरीके से पेपर लिए जाते तो I don't think ये सब करने की ज़रूरत पड़ती。大批學生也個示威團體攏行就街仔頭痛罵教育部長失職，甚至是去予警方出動水炮車甲趕走。面對這場風波，閣一解讓大家看到印度多年以來考試作弊問題，政府敢真正有法度挽回民眾對教育制度的信任，這就閣要等待時間的檢驗。記者綜合報道。